तो हमने वो किया है। बट अगर आप सामने दिखेंगे तो आई रियली नो कि भाई हाँ ठीक है आप सामने हैं, तो मैं उनसे बात कर रहा हूं तो मेरे रिएक्शंस हैं. सो आई हैव आशुतोष जी पुटिंग ऑन हिज वीडियो, मनीषा पुटिंग ऑन हिज वीडियो, मनस्वी, आद्या, आदित्य, और एक और रिक्वेस्ट, अपने नाम प्लीज पुट ऑन योर रियल नेम, स्टूडेंट नेम, सो दैट हमको वो भी मालूम है कि हु इज द पर्सन. सो आई लाइक whoever is the student, please put your screen name as your student. So we have more parents and students coming in our offline mode. So Aditya, आपका _1, आपका बेटा जो नाम है, put that as your screen name. You're allowed to rename yourself, so you could rename it accordingly. So बाकी जन who are unable to start their video, एक और request है कि please चालू करें जिससे अपन एक healthy discussion कर सकें. Then we'll get started. Manish ji, all yours, sir. Please start. Right. Thank you so much, Anubhav sir. So a very good morning to everybody who is joining us online, people who are joining us offline from our Kharghar classroom center. A very, very good morning. And I need a small acknowledgement. If I am audible, please let me know by a thumbs up or a yes, so that I'm sure of my audio levels. Yeah, thank you so much. Thank you. Right. So welcome to this Sunday webinar. And this is a fantastic new topic, new session for us, where we are talking about career counseling. So let me begin. I'll use my PPT. There are 2 speakers in this webinar, and we'll be speaking in turn. It's me, Manish Saraf, and then Mr. Anubhav Sinhan. He'll be one of these speakers, and we'll talk in turn, and we'll be using a PPT, which we'll use as an aid to convey our thoughts. So let me share that. Yeah. So this is my PPT, and I hope this is visible to you. So this is UT Talk, with a difference that today's UT Talk is being presented in association with UDream Education Foundation. So the talk will be delivered by myself and my colleague Anubhav sir. We will deliver this talk. Before we begin, you may want to keep a notebook or a pen or a pencil handy with you. You may want to write down some information that is flowing towards you. We'll have question and answers session towards the end when we have delivered our talk. So we'll appreciate that you can keep your queries and questions for the end, when we'll have an open house and we'll like to discuss all your queries and concerns or questions, if any. There'll also be a feedback link towards the end in the chat box. And people who are attending it offline, they'll get a form where we'll be happy to know about your feedback from this session. So let's start. On the webinar today, this is the agenda we'll follow. We'll talk about what is UDream, what is UT, introduction. Then we'll talk about some real life student cases. We'll talk about some common mistakes, problems, practices, myths around career decision making. So we'll try and see those. We'll come down to this career counseling product called Disha, which is being offered at UT. And we'll talk about its official launch today, and how UT has partnered in this and how we can help you. And then we'll go for open house. So these are a few points that we are going to cover in next 45 minutes or so. So let me start by first introducing UDream. UDream is an education foundation. It's a not-for-profit organization. This basically is working in career counseling, career awareness to help students make right decisions, so that they make right career decisions for the careers for future. So the idea is to bridge gap between the potential of student that he or she beholds and mapping it to the right career so that they enjoy a successful career. Disha is one such specialized program from UDream where career counseling takes place, and currently this is being offered at UT. So UDream and UT together are offering Disha program. UT, since most of you come from UT background, I can say, where you are associated with us in some or the other way as parents and students with UT.
but still I'll take this opportunity to quickly introduce ourselves. So UT stands for Universal Tutorials. We'll be completing our 24 years of operation in less than a month's time now. We have coached, trained, influenced, and have impacted lives of more than 35,000 students across various courses that we do. We do it from 7 physical branches. And since COVID, we had launched a lot of online products and services. So we, in a way, are functioning pan-India, and we are delivering various services. We work largely under 3 verticals at UT. Board exams, ye aapko pata hoga because most of you are enrolled with us in this program, where we do CBSE, ICSE coaching for 9th, 10th. We do test series. So this is all board exam preparation vertical. Then we have Indian exams, which are all these Indian professional exams like JEE for engineering, NEET for medical, IPM for management. So we do various Indian exam preparation. And the third vertical at UT is study abroad, where we do after 12th undergrad exam preparation, university counseling. We do post-grad exam preparation and university counseling. So board exams, Indian exams, and study abroad are 3 verticals where UT is delivering its services. Okay, so now coming down to the crux of this webinar today, where we are talking about the career counseling. So we thought that why not share some real life stories, real life student stories, and discuss with you, share with you, and let's see how these students have progressed. So what we have done is we have handpicked and selected 4 such stories. Of course, there are many, but we have handpicked and selected 4 such stories coming from different career domains. So the idea about these stories are, because these are real student stories, I'm sure you will be able to identify with some or more of their career aspects with their life. ये 4 बच्चे हैं, चारों की अलग-अलग जर्नी है, अलग-अलग stories हैं. The idea is that while I narrate these stories to you, you will be able to identify some part of it with yourself or with your child. So, you will be able to appreciate it more if you can see through the career dilemmas that these kids have gone through. And then you will be able to figure out, because you are in the same boat right now, जो इन लोगों ने कभी travel किया था. So you will be able to correlate and identify with that. So the stories become the foundation of what we are going to discuss today. So my stories, without letting you know much right now, let me first begin with these stories. So the first story that I would want to share with you is of this girl, Rishima Sinha. Rishima Sinha, if I have to describe her, I can tell you this is one girl who's bright with her academics. She has got super academics. When it comes to academics, all her subjects were beautifully done, and she would excel in all subjects in her schools. She would not know what to pursue because she was equally good with everything. So what is that she would do after her 10th or after 12th per se was not clear, but she was bright, academically very, very bright child. She would always say and share with us that I remember the sentences when she would say, I really don't know what I want to do. I can do anything. You tell me, you suggest me what I should do, but I'm very confused. If you talk to her parents, they were very supportive. They said they will support whatever her child Rishima wants to do. Magar kya karna hai, humko bhi nahi pata hai. And that created a lot of worry. So this is all in standard 8th transition happening to standard 9th. ये उस समय हो रहा था Rishima Sinha के साथ, where a very bright child, but not sure what she can do. She found herself good with everything, and her interest was in everything. But this created a lot of confusion, and there was no way forward. This is all in 9th standard, typical classical case. And this is nothing, unnatural. Rather, this is a very natural thing. 9th mein magar koi clue nahi hai, and good in everything. Now, if you look into this case, there is a small problem. The problem is, and this is, I think, a general problem which most of us would face, that we really don't know
what to do after school or which subjects to pick after 10th, and then what will lead them into in 12th and what will happen after 12th. So the classic problem that she was facing. The myth was, can do anything is a very good phenomena. मैं कुछ भी कर सकता हूँ या कर सकती हूँ is a very good thing to have, because then you're open-minded. This is a big myth, because then you're disillusioned. There's a lot of time left. अभी हम 8th से 9th में ही आए हैं, बहुत समय बचा है. कर लेंगे, कुछ ना कुछ तो कर लेंगे. Why decide so early? Isn't it too early? Given the competitive scenario, given the kind of preparations you want to do, this is a big myth. You cannot really say that you would want to push it to 11th hour, because then every path is the right path for you and पता नहीं चलेगा कैसे समय निकल जाएगा. एक और केस लेते हैं, अनमोल धवन. Anmol Dhawan, a very energetic child, lot of enthusiasm whenever you meet him, and the way he will greet you, you can understand those vibes. Very, very positive child. With some very strong reasoning. Class में जिस तरह से वो questions पूछेगा, वो interpretations देगा, strong reasoning skills. Very good scores in science. Science particularly इसलिए मैं बोल रहा हूँ because he thought that science में सबसे ज़्यादा score आता है, तो science is something that he would want to do. So he got very good score in sciences subject and he wanted to do something in science. He would always say, when you ask him क्या करना है Anmol Dhawan, तो Anmol Dhawan would always say that, you know, everybody says because I am good in science, I should do science. तब ऐसा बोलते हैं कि तुम साइंस में बहुत अच्छे हो, तुमको साइंस में बहुत अच्छे नंबर आते हैं, तुमको साइंस में कुछ करना चाहिए. Parents also were inclined for him to do engineering. They also wanted him to do engineering क्योंकि वो sciences side से है. So Anmol Dhawan also wanted to do science. He would always talk about two very famous business personalities, financial tycoons. He would talk about them. ये हमारे साथ अनुभव सर के साथ he would share and he will talk about them as their role models. And these people come from business and finance fields, from share markets and financial markets of India. So Anmol will always very fondly talk about them. अब ये पूरी चीज में अनमोल के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, you know, what to do after school is not clear, because he thought science में अच्छा है तो उसको वही पढ़ना चाहिए. The biggest myth we at times carry is, जिस सब्जेक्ट में मार्क्स सबसे ज्यादा आ रहे हैं वही आपका इंटरेस्ट एरिया है. जिस सब्जेक्ट में मार्क्स सबसे ज्यादा आ रहे हैं वो सब्जेक्ट है जहां पे आपको करियर बनाना है. Scoring and career may be related, but they may not be related directly. And going by the hearsay, what people say कि engineering में सबसे अच्छा career है, science सबसे अच्छा है, तुमको science करना चाहिए. So going by what people say, at times we decide about our careers from that. And Anmol was caught in the same problem, in the same dilemma. Uska subject score was linked to his strength area. What people were saying commonly, relatives, friends, family, he made himself believe कि हाँ यही सबसे अच्छा होगा because people said that. And this is again something that you will also relate to. My third story of the day. This is a boy called Kailash Gopal. Kailash Gopal, a very, very sincere student. He would follow instructions to T. आप जैसा बोलेंगे वो वैसा करेगा. Very focused, clear, very clear in life. Engineering ही करना है. So he got into his engineering preparation right after 10th. His father, an architect, so he got into engineering preparation. शुरू से गोल था engineering करना है. He got into that preparation right after 10th. जैसा कि engineering में होता है, you set your dream on IITs. So he had big dreams, जो कि IIT पे जाके fix हो गया. IIT करना है. But he thought that let me create a backup option. वो तैयारी के साथ साथ he also started creating backup option for studies abroad. तो आप जब भी इससे बात करेंगे, without inch of doubt, very clear, focused engineering करना है, and he started on that journey. But you know how IIT preparation is. It is, I'll say, at times irrational, at times unreasonable. It's not so much about your talent, because you are talking about a demand supply where there is a huge demand and very less supply. कितना competitive है IIT. IIT looked too far for him. He was doing very well.
98 परसेंटाइल का बच्चा है ये, विच मीन्स इंडिया के टॉप 2% टैलेंट में आता है ये बच्चा, बट स्टिल आईआईटी में सीट मिलना बहुत मुश्किल। गॉट disheartened, started losing hope। वो जो रेस है आईआईटी के लिए उसमें बहुत बुरी तरह से ग्राइंडिंग होने लग गई, मोटिवेशन लेवल्स नीचे होने लग गए, एस्पिरेशंस डाउन होने लग गए, फीलिंग फॉर गुड फॉर नथिंग आने लग गया, एंड दैट लेड हिम टू गो टू मल्टीपल प्लेसेस। तो मैं क्या करूं, क्या इंजीनियरिंग छोड़ दूं, क्या मैं बाहर पढ़ने चले जाऊं, डिफोकस हो गया, क्योंकि वो ग्राइंड ही ऐसी है। द प्रॉब्लम वाज फोकस होने के बाद भी कंसिस्टेंसी मिस होने लग गई, तो इससे आपका फोकस एक्चुअली आपका डाइवर्ट होने लग गया। Self realization was not there। Self realization is very important, but people think at times myth है कि वो इतना important नहीं है जितना IIT important है, and IIT is the end of it। If you don't make it to IIT, you are no good। जैसा मैंने बताया बहुत competitive scene होता है, around 10 lakh people write। अगर जनरल कैटेगरी में देखेंगे तो 6000 सीट भी नहीं है IITs में। It is that competitive। So this is Kailash Gopal for you। तो अभी तो मैं आप लोगों को इन लोगों का वो करियर डिलेमा और वो किस प्रॉब्लम में फंसे हुए वो बता रहा हूँ। नाउ हियर इज अ केस जहां पे शायद ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, seemingly। Let's see। Yes, Sunil, I am talking about a multi-talented student। ट्रिनिटी कॉलेज लंदन से इसने म्यूजिक सर्टिफिकेट्स ले रखे हैं, would do cooking, excellent with his mathematics skills, excellent in science, social science, Hindi, Sanskrit, languages. So overall, holistically, a well-rounded personality, very good with academics, extracurriculars, a debater, a public speaker. So overall, you know, anything that you would want in a child is there। Very clear, would want to go to US for undergrads, कि मुझे US जाना है और undergrad के लिए जाना है, but the path is not clear because the way admissions happen in US is very different from how it happens in India, and Anubhav sir will talk more about it। So was confused between choosing career, computer science करना है, economics करना है, मुझे social sciences की तरफ जाना है या IT की तरफ जाना है। So there was a lot of information that this child has, like most of us have now on our fingertips। There was information bombardment, the blogs, the Googles, the various advisors of the world, बहुत कुछ internet पे available है, which he also got exposed to in his 9th standard, and because of this, that led to problem of plenty। There was a lot of things going in all directions, which led to a lot of confusion, but there was no clear path। So having a dream is one thing, but getting the right start and then starting on the right path so that you achieve the goal is another thing। एक गोल होना बहुत अच्छी बात है, बट वो गोल के लिए क्या पाथ होगा, कौन से माइलस्टोन, इंटरमीडिएट माइलस्टोन कवर करने पड़ेंगे, ये जानना बहुत जरूरी है। अदरवाइज व्हेन यू रीच योर गोल और यू टेंड टू रीच योर गोल, यू रियलाइज कि अरे कुछ चीजें तो हमसे मिस हो गई, तो अब हमारा यहाँ तो एडमिशन हो ही नहीं सकता, ये करियर के ये वाले पॉइंट्स तो हम मिस कर गए, अब तो हमारा कुछ हो नहीं सकता। सो हैविंग ड्रीम इज वन थिंग, बट इफ यू डोंट स्टार्ट राइट, if you don't cover intermediate milestones, it can create problems। So these are 4 stories that I brought to you। इनका क्या हुआ is something that I would love to discuss, but not right now। इन बच्चों ने क्या किया। So what I would want to do here is I will hand it over to Anubhav sir to help us understand, what was the way, an ideal way, what is the rather ideal way to tackle such situations when there's no focus, when there is focus but no consistency, when there's dream but no path, when there is a path you are traveling but it is such a gruesome path that you try to deviate। तो अगर ऐसे ऐसे सिनेरियोज हैं तो एक आइडियल वे क्या होगा टैकल करने का। लेट मी हैंड इट ओवर टू यू अनुभव सर at our Kharghar classroom। All yours, sir। So please let me know। Thank you very much, Manish sir। Now I will be doing, I hope my voice is okay। So I will, Disha, you could keep in that mode itself, the PowerPoint mode itself। Yeah, so thank you very much
and I hope I have control of this. Thank you. You have control. I have a couple of two sets of audiences. तो आपको मेरा eye contact जो है, जब मैं physical audience को देखूंगा तो my eye contact will be towards the physical audience, and when I'm looking into the camera, that time you will see me looking into the online audience. So allow me कि मैं दो बार ऐसे करता रहूंगा बीच-बीच में. So I hope I am clear. So Manish sir ने जो बात करी है 4 बच्चों की, ये this is something which we handpicked, and ये 4 नहीं है. These are more than 30,000 students over a period of 20 years. तो हमने अभी ये 4 बच्चों की स्टोरी आपके पास लेके आए हैं. And I think by now you must have realized सबसे बड़ी problem is career, deciding कि हमको करना क्या है. And this is one common area. And I, as an educator, I think me, Manish, हमको लगता है कि ये एक समस्या है. Yesterday I was attending, मेरा छोटा बेटा is now in the same boat. I am not only an educator, but I'm also a guardian like you. I'm in the same boat as you. He is now in 10th grade. Manish sir ka beta, Manish sir's elder son is now in 12th grade. So we both do realize it from both the sides of it, as an educator, also as a guardian or a parent. So मैं जो बात कर रहा हूँ, कल एक स्कूल इंटरेक्शन में गए थे जहां पे वो स्कूल वाज ट्राइंग टू मेक द चिल्ड्रन अंडरस्टैंड कि अगले साल आपको क्या करना है. Believe me, in that interaction of my child's school, he is in grade 10th, उसमें बच्चों को बेसिक चीजें भी नहीं मालूम कि साइंस क्या होता है, कॉमर्स क्या होता है. अच्छा, इधर सबसे बड़ा प्रॉब्लम एरिया क्या है? आप एज पेरेंट्स you think, अरे यार IIT क्या है, IIM क्या है, मालूम होना चाहिए. But believe me, when I am talking to a set of parents and students को IIM का, कई बच्चों को IIM का फुल फॉर्म नहीं मालूम, कितनी IIT से नहीं मालूम होता है, NITs हैं, तो काफी बेसिक चीजें उनको मालूम नहीं होती हैं. So it's important as guardians, as educators, that we take the child through that journey कि भाई you decide what is the right career. So ये जो बच्चे हैं, इन बच्चों के साथ at Universal Tutorials हमने कई सालों से कैसे जर्नी करी है. तो I just present you क्या common myths जो सर ने छोड़े. You will realize somebody is not clear. Rishima was not clear. सब कर सकती है. Then अनमोल साइंस, क्यों सब लोग साइंस लेते हैं तो मेरे को भी साइंस लेना चाहिए. That's what Anmol saying. So these are some typical type tasks आपको दिखेंगे. Then you are talking about somebody who's very focused. कैलाश बोलता है मैं IIT करूंगा, लेकिन आगे जाके वो IIT की रोड पे मतलब लड़खड़ा गया. उसको लगता है IIT नहीं मिली तो सब चीज खत्म. तो इनका क्या हुआ, कैसे हुआ? How did we take them? Yes, he was planning to do study abroad, बहुत फोकस्ड है, लेकिन स्टडी अब्रॉड की जर्नी इतनी सारे ऑप्शंस हैं, बाद में जाके लॉस्ट हो गया कि मैं इधर नहीं जाऊंगा तो इधर क्या होगा, ये भी नहीं होगा. तो ऐसे कैसे करते हैं? So let's go through. If you will understand and appreciate, इंडिया में करियर सिनेरियो कैसा है? How is the career scenario post 12th standard? तो क्या है करियर सिनेरियो? बहुत सारे चौराहे हैं बच्चों, एंड इसमें मेरा ऑडियंस है कि यू किड्स as well as parents, but largely the kids. बच्चों बहुत सारे चौराहे हैं. Now let's try to understand कि हो क्या रहा है. आपको क्लैरिटी होनी चाहिए. तो अगर आप रियली अंडरस्टैंड करोगे द करियर सिनेरियो इन इंडिया इज, आपको एक करियर चूज करना पड़ेगा. कब चूज करना पड़ेगा? 10th के बाद 12th में एक करियर चूज करना पड़ेगा. तो मैं एग्जांपल के लिए, सपोज आपने चूज करा मेरे को इंजीनियरिंग करना, तो आपके स्कूल एग्जाम से वहां पे दाखिला आपको नहीं मिलेगा. यू विल नॉट गेट एडमिशन बेस्ड ऑन योर स्कूल एग्जाम्स. आपको क्या करना पड़ेगा? आपको एक एंट्रेंस एग्जाम लिखना पड़ेगा IIT की, कब? 12th के बोर्ड एग्जाम के बाद. फिर जाके आपको दाखिला मिलेगा IIT बॉम्बे जैसे कॉलेज. तो देयर इज एन एंट्रेंस एग्जाम व्हिच यू हैव टू राइट. नाउ इफ दिस चाइल्ड डिसाइड्स कि नहीं मेरे को इंजीनियरिंग नहीं करनी, मेरे को मेडिकल करना है, तो मेडिकल करना है
मेडिकल में आपको एक दूसरा एंट्रेंस एग्जाम लिखना पड़ेगा, पोर्शन अलग है, उसके सब्जेक्ट्स अलग है, और उस एग्जाम का नाम है नीट लिखना पड़ेगा। नीट इज नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट। ये भी कब होता है? ये 12th के बाद होता है, और फिर आपको आपके ड्रीम कॉलेज में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में एडमिशन मिल सकता है। तो मेरा कहने का क्या मतलब है, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, अब कोई बच्चा डिसाइड करता है कि मेरे को लॉ करना है, तो लॉ के लिए अलग एंट्रेंस एग्जाम विच इज कॉमन लॉ एंट्रेंस एडमिशन टेस्ट, और फिर उनको एनएलयू बैंगलोर जैसे इंस्टीट्यूट में एडमिशन मिलेगा। मैं क्या कहना चाह रहा हूं इज ऑल पेरेंट्स एंड ऑल स्टूडेंट्स रियलाइज, और ये सिर्फ 3 नहीं है, मेरी ये स्लाइड भर जाएगी। अगर आप बोलोगे डिफेंस करना है तो आपको एनडीए का एग्जाम है, आप बोलोगे डिजाइन करना है तो एनआईटी का एग्जाम है, आप बोलोगे होटल एडमिनिस्ट्रेशन और होटल करना है तो होटल का एक अलग एग्जाम है, आप बोलोगे कॉमर्स करना है तो सीए फाउंडेशन का एक अलग एग्जाम है, आप बोलो करियर, उन सबके अलग 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 एंट्रेंस एग्जाम, और ये सारे एंट्रेंस एग्जाम कब हो रहे हैं? ये 12th के बाद। आप बोलोगे मेरे को बाहर जाना है, स्टडी अब्रॉड करना है, तो उसका एसएटी का एग्जाम है। ये एग्जाम अलग अलग टाइम पे हो रहे हैं, अलग अलग विषय में हो रहे हैं, सब्जेक्ट्स अलग अलग, सिलेबस अलग है, कंटेंट अलग, और कई बार इन एंट्रेंस एग्जाम्स का पोर्शन एक साल का नहीं, 2 साल का पोर्शन। तो बेसिकली दी स्ट्रैटेजी इज कि आपको एरिया पहले सिलेक्ट करना जरूरी। आप ये सोचो कि मैं अभी तो बहुत टाइम है, अभी तो बच्चा एकदम 9 है वो है, तो आपको दिक्कत होगी। आपको यू हैव टू सिलेक्ट कौन सा एग्जाम आपको लेना है और फिर उस कॉलेज में एंटर करना। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? तो ये एक है। तो वो जो तीनों चारों बच्चों की अपन ने स्टोरी सुनी, उनके साथ भी ये हुआ, किसी में कोई फोकस था, कोई फोकस नहीं था। आगे बढ़ते हैं। ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस इंडिया में क्या है? स्टूडेंट आर अनडिसाइडेड अबाउट देयर करियर इंटरेस्ट, वो लोग का डिसीजन ही नहीं होता है, एंड दे डोंट वांट टू थिंक अबाउट इट। वो है कि भाई इमीडिएट गोल्स, अच्छा अभी पहले 10th करो फिर बाद में देखो, अभी पहले 12th करो फिर बाद में देखो, पहले तुम 10th तो खत्म करो, एंड उस चक्कर में दे डोंट पे अटेंशन टू दिस करियर इंटरेस्ट। देयर इज नो क्लियर डायरेक्शन। फिर ये होता है जो नेबर ने बोला, जैसे वो अनमोल ने बोला चलो ठीक है साइंस सीखेंगे, साइंस कर लेते हैं। दे स्टार्ट राइटिंग ऑल एग्जाम्स। मैंने 9-10 में बच्चों को देखा, स्कूल में आरएमओ का एग्जाम हो रहा है, आरएमओ भी लिख लिया, आईएमओ का एग्जाम हो रहा है, आईएमओ भी लिख लिया, एनटीएससी का एग्जाम हो रहा है, एनटीएससी भी लिख लिया। जो एग्जाम हो रहे हैं वो एग्जाम लिख लो यार सारे, क्या हो रहा है ये लिख तो लो। तो सारे एग्जाम्स लिखने लग गए एंड दे आर कंफ्यूज्ड। सो आगे बढ़ते हैं। अब और इमीडिएट ये हुआ, देखिए देयर आर 2 काइंड्स ऑफ, वन इज करियर चॉइस, उसके ऊपर भी ध्यान नहीं दिया जाता है कई बार, पीपल आर नॉट पेइंग अटेंशन, और इमीडिएटली आफ्टर 10 आपके पास ये वाले क्वेश्चंस आ जाएंगे। बिफोर करियर डिसीजन, आफ्टर 10th क्या करना है ये आ जाए। वो क्या रहेगा उसमें? इमीडिएट क्वेश्चंस आएंगे आपको, 3 क्वेश्चन आएंगे कि आपको कौन सी स्ट्रीम में जाना है, कौन से बोर्ड में जाना है, और वेदर इंटीग्रेटेड। नो, मैं 1-1 मिनट इस पे टाइम स्पेंड करता हूं। आपको सवाल आएगा कि भाई अब 3 स्ट्रीम, 10th तक आप सब बच्चे स्कूल में एक ही क्लास में पढ़ते हैं, आपके डीपीएस में 6 सेक्शन, ए बी सी डी ई एफ जी एच, ऐसे 7 सेक्शन, बट वो सब पढ़ रहे वही सेम सब्जेक्ट्स। लेकिन 10th के बाद यू विल बी डिवाइडेड कंपल्सरीली कि भाई यू पिक अप साइंस, यू पिक अप कॉमर्स, और यू पिक अप आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज, और इनके सब्जेक्ट अलग होंगे। साइंस में आप सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी पढ़ोगे, यहाँ पे अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज पढ़ोगे, यहाँ पे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, लैंग्वेजेस पढ़ोगे। यू विल पिक अप एंड स्टडी वेरी डिफरेंट सब्जेक्ट्स। और अगर आपने ये पढ़ लिया तो आगे आप कुछ फील्ड्स में जा सकोगे, कुछ फील्ड में नहीं जा सकोगे। इधर चले गए तो आप इधर नहीं जा सकोगे, इधर चले गए तो इधर नहीं जा सकोगे, ऐसे सारे दरवाजे बंद होना चाहिए। तो आपको ये डिसाइड करना है कि आपको ये क्या, और इनके अंदर इंटरनल सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन डिसाइड कर कि साइंस लेना है तो पीसीएम लेना है या पीसीबी लेना है, कॉमर्स लेना है तो विद मैथ्स लेना है, विदाउट मैथ्स लेना है, ह्यूमैनिटीज में कौन से सब्जेक्ट्स पिक करने हैं, फाइन आर्ट्स लेना है या, तो ये सारे डिसीजंस लेने, और ये सारे डिसीजंस के बाद आज हो जाएंगे। नेक्स्ट एक और डिसीजन होगा कि भाई कौन से बोर्ड में, मेरे को सीबीएसई में कंटिन्यू करना है कि मैं आईसीएसई में, उनको आईसीएसई से सीबीएसई में जाऊं मैं, या मैं स्टेट बोर्ड में शिफ्ट हूं,
या मैं आईबी बोर्ड में चले जाऊं, मेरे को तो बाहर जाना है, स्टडी अब्रॉड करनी है। तो ऐसे ये भी 4 डिसीजन हैं जो आपको लेने हैं, एंड यू हैव टू डिसाइड कि करना क्या है, एंड दिस विल हैपन इमीडिएटली आफ्टर 10। तो ये भी एक डिसीजन लेना है। फिर आपको डिसीजन लेना है कि भाई इंटीग्रेटेड नॉन इंटीग्रेटेड, आई डोंट नो, दिस इज समथिंग व्हिच वाज नॉट देयर हमारे जमाने में, एज पेरेंट्स हमारे जमाने में नहीं था ये डिसीजन, अब आपके लिए ये हो गया। इंटीग्रेटेड क्या है? इफ यू विल सी, इंटीग्रेटेड इज, व्हाट इज इंटीग्रेटेड? नॉन इंटीग्रेटेड तो वो जो नॉर्मल है, रेगुलर आफ्टर स्कूल आवर्स कोचिंग, जैसे आप अभी हमारे पास सुबह स्कूल जा रहे हो, शाम को कोचिंग आके कोचिंग कर रहे हो, व्हिच इज द नॉर्मल थिंग। बट व्हाट इज दिस इंटीग्रेटेड? इंटीग्रेटेड इज एडमिशन, यू टेक कोचिंग में ही एडमिशन ले लेते। हमारा फर्स्ट फ्लोर अगर आप नीचे ऊपर के जाओगे तो दैट इज आवर चैंपियंस जूनियर कॉलेज। बच्चे 11 12 में हमारे पास ही एडमिशन ले लेते हैं, दो कॉलेज में नहीं जाते। तो दैट इज, वहां पे हमारी फिजिक्स लैब है, केमिस्ट्री लैब है, आईटी लैब है, वही हमारा जूनियर कॉलेज हो गया। तो बच्चे हमारे से पढ़ते हैं, दो बार क्यों पढ़ना है? इट सेव्स टाइम। दिस इज द कोटा मॉडल, जो करीब आज से 10-15 साल पहले पॉपुलर हुआ और पूरे इंडिया में पॉपुलर है, इन बॉम्बे में भी पॉपुलर है, कि अगर आपको आईआईटी जैसे एग्जाम को क्रैक करना है तो इट इज सेड कि यू शुड टेक इंटीग्रेटेड। तो आपको ये भी डिसाइड करना है कि मेरे को इंटीग्रेटेड लेना है, और ये कौन से एग्जाम के लिए इंटीग्रेटेड लेना है। अभी तक सिर्फ आईआईटी वगैरह की बात करते थे, अब नॉन इंजीनियरिंग में भी इंटीग्रेटेड ऑप्शंस आ गए हैं। वी आर ऑफरिंग इन कॉमर्स नॉन इंटीग्रेटेड, कि भाई काय को कॉमर्स वो वापस स्कूल क्यों जाने का, यहीं पे सीए फाउंडेशन यहीं पे करो। तो दोस काइंड्स ऑफ डिसीजंस आपको लेंगे। तो ये डिसीजंस आप लें कैसे? हाउ वुड यू टेक दीस डिसीजंस? प्लानिंग 4 years of high school, the universal tutorials way, this is something is what I am talking about. अब ये जो है, we have evolved and created a very professional product where we are सिर्फ, तो हम दो तरह का काम कर रहे हैं हम, you know, if you realize, हम लोग अप्रैल से चालू हैं and we've been doing these webinars which are student information webinars. अब here आप सुनो, समझो and then take a decision. But we are now presenting to you a very evolved product. What is this evolved product? इसमें हम क्या करना चाहते हैं? इसमें हम कहना चाहते हैं कि आप पहले, सबसे पहले अपना पोटेंशियल चेक करो। अनमोल धवन जैसे मत करो कि वेयर यू थिंक कि साइंस में सबसे अच्छे नंबर आते हैं तो मैं साइंस मेरा फेवरेट, बाद में उसको रियलाइज हुआ कि साइंस नहीं, एक्चुअली गुड इन समथिंग एल्स। तो चेक योर पोटेंशियल, देन चूज योर एग्जाम। कैलाश ने चूज कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर चूज करने के बाद वंस यू मेड अ डिसीजन, देन मेक श्योर कि ऐसा नहीं करो कि बोर्ड एग्जाम को आप छोड़ दो। बोर्ड एग्जाम इज इंपॉर्टेंट। देयर आर स्टूडेंट्स हु वुड, जैसे कोविड हुआ, बोर्ड एग्जाम के अगर मार्क्स नहीं होंगे तो फिर आगे जाके आईएएस बहुत सारों में बोर्ड एग्जाम का बहुत बड़ा वेटेज, यू कैन नॉट इग्नोर बोर्ड एग्जाम। तो बोर्ड एग्जाम पे वेटेज रखो, प्रिपेयर बाय बेस्ट फैकल्टी and then achieve success. तो ये हम कैसे अचीव करते हैं? Here I like to talk about एक YouDream Education Foundation company है which has got this beautiful product which is known as Disha, जहां बच्चों को दिशा देने की कोशिश। अब ये प्रोडक्ट क्या है ये मैं आपको समझाना चाहूंगा। What is this product? This product is essentially a one-on-one career counseling product. जहां it is not, जहां पे मैं अभी ऐसे जैसे एड्रेस कर रहा हूं पेरेंट्स को, we are not talking about addressing parents in a bade group. No, it is always a one-on-one product. Counselor and the student sitting सामने सामने, and it is a one-on-one product. अब ये क्या है one-on-one product? Let me explain you. It has 3 parts. दिशा के 3 पार्ट हैं. First is, अभी call it as initial primer part. First stage बोलते हैं उसको, हम initial बोलते हैं. सेकेंड स्टेज इज असेसमेंट, जहां पे हम साइकोमेट्रिक टेस्ट्स करते हैं, वो भी मैं एक एक करके समझाऊंगा आपको. एंड थर्ड इज द फाइनल टेक ऑफ. ये ऐसे 3 स्टेज का प्रोडक्ट है ये. अब ये क्या है? ये 3 स्टेज का प्रोडक्ट इज एसेंशियली, ये यहाँ पे हमारे क्रिएटिव डिपार्टमेंट ने एक मेरे को एड करने के लिए पावर पॉइंट में कि ऐसे अच्छा बना के दिया है व्हिच टेल्स यू. तो ये इनिशियल क्या है? Initial stage is जहां पे you will be given a set of questionnaire, and ये questionnaire students को दिया जाएगा और parents को दिया जाएगा और उसमें पूछा जाएगा आपके aspirations. Believe me, मेरे पिछले 20-25 सालों के experience में I realize कि parents की कुछ अलग aspiration चल रही रहती है और बच्चे की कुछ अलग aspiration चल रही है.
and they have not actually thought about it and they have reconciled. और फादर मदर सोचते हैं ये करना चाहिए उसको, ये उसकी स्ट्रेंथ है, और बच्चे कुछ अलग ही टैंजेंट करते हैं. This is something which is the starting point where we give you a set of questionnaire and आपको एक अलग रूम में बैठाते हैं, पेरेंट्स को अलग रूम में बैठाते हैं और बोलते हैं प्लीज राइट दिस in a formal thing. So this works. मेरे को लगता है at times 10 में से 2-3 केसेस में we find एक बहुत बड़ा variance कि बच्चा बोल रहा है मेरे को तो क्या बनना है, what do you want to become? I want to become a film actor. And father, he should become a fine engineer. That's a huge difference. इसमें एक स्टोरी नहीं आई है. This is एक चिराग जैन बाल भारती का बच्चा था आज से 4 साल पहले. Father is an Infosys development engineer. Father mother चाहते थे कि वो इंजीनियर बनेगा, IIT में हमारे प्रोग्राम में एनरोल्ड है, और वो बच्चे से पूछा तो बोलते नहीं वो तो फिल्म में करना है. Finally he is at Purdue studying film and technology. He's gone. तो ऐसे, तो this is something which we give. पहले एक formal environment में आपको वो दिया. After that, what we do is we take the child, student को we take them through a big career canvas. And जो ये 8वीं 9वीं का बच्चा है या 10वीं का बच्चा है, इसको आपके presence में me and Manish and the UDream Foundation people, what they do is they take them through the entire career की क्या ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल. ये बच्चों को मालूम ही नहीं होता कि भाई तुम इंजीनियर बन सकते हो, डॉक्टर बन सकते हो, ये मालूम. लेकिन यू कुड बिकम अ जर्नलिस्ट, यू कुड बिकम अ लॉयर, और आप क्या कर सकते हो. यू कुड बिकम अ सीए. सीए होता क्या है तो नहीं मालूम. सीए बोलते हैं, सीए अकाउंट्स में कैसे काम करता है. तो एक वेरियस. अब इसमें वी डू नॉट स्पेंड टाइम ऑन सेइंग कैसे बन सकते हो. वी रादर ओनली स्पेंड टाइम इन सेइंग कि सीए करता क्या है. उसके सीए जैसे फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल के लिए बोला इन्वेस्टमेंट बैंकर. इन्वेस्टमेंट बैंकर कोई चुनने वाला है तो उसके साथ एक पर्सनालिटी के साथ करें. लॉयर हरीश सालवे उस पर्सनालिटी के साथ करेंगे. और फिर आपको बच्चों को ट्रेड समझाएं कि अगर लॉयर बनना है तो आर यू अ वेरोशियस रीडर. आप इतनी सारी चीजें किताबें पढ़ने में इंटरेस्ट रखते हो क्या, तो आपका इंटरेस्ट होगा, ट्रेड होगा, नहीं तो नहीं. आप तो ऐसे कर करके ये इनिशियल स्टेज में 2 चीजें करें. ये पूरा 1-on-1 हो. आफ्टर दैट वी गो ऑन टू द सेकंड स्टेज व्हिच इज असेसमेंट. नाउ बच्चे को वी टेक देम थ्रू complete scientific psychometry tests, which are 4 tests: intelligence, personality, interest and aptitude. ये 4 टेस्ट के थ्रू लेके गए और इनको ये 4 टेस्ट लिखवा. These are scientific psychometry tests, जिसकी रिपोर्ट आती है इसमें बताते हैं कि बच्चे का विजुअल एप्टीट्यूड कैसा है, बच्चे का लॉजिकल एप्टीट्यूड कैसा है, बच्चे का साइंटिफिक एप्टीट्यूड कैसा है. तो उससे अपने को एविडेंस है कि जो ये बोल रहा है, ये जो सोच रहा है, ये इसमें वो है या नहीं है. So that is the second stage psychometry. And then final stage takeoff में हम क्या करते हैं. Final stage takeoff में basically we come up with 2 to 3 career choices कि हमारे हिसाब से जो आपने क्वेश्चन में लिख के दिया था, आपने जो आपके ड्रीम्स एस्पिरेशंस दिए थे, आपके जो टेस्ट में आएगा उसके हिसाब से हम रेकमेंड करते हैं कि आपको ये 2 या 3 करियर परस्यू करने चाहिए. और वो हम आपसे 1-on-1 डिस्कस करते हैं एंड वी क्रिएट अ रोड मैप. रोड मैप की 10th से पहले क्या करना चाहिए, आपकी क्या प्रिपरेशन होनी चाहिए, 10th के बाद आपकी क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए, और 12th के बाद आपको कौन से कॉलेज में और कौन से एग्जाम में जाना चाहिए. सो दैट इट डजंट हैपन लाइक यश व्हेन ही गेट्स बम्बार्डेड. अरे यार मैंने एक ही हैंडल नहीं करी, ये डेडलाइन मिस हो गई. ही नोज हिज डेडलाइंस. तो कैसे वो आप पूरे पाथ पे रहोगे हमेशा. तो हम आपको पूरा पाथ बना के देते हैं. बिफोर 10th क्या, आफ्टर 10th क्या, आफ्टर 12th क्या, ऐसे रोड मैप बना के. तो दैट्स द फाइनल स्टेज. तो बेसिकली बेनिफिट क्या मिला आपको. दिशा के बेनिफिट्स इज यू अंडरस्टैंड द ओवरऑल लैंडस्केप, यू नो व्हाट यू आर गेटिंग इन. पूरा आप समझते हो. यू नो योर स्ट्रेंथ. कई बच्चों को उनकी स्ट्रेंथ भी मालूम होती है. फिर इसके थ्रू मालूम पड़ता है कि भाई वेयर आर दे एक्चुअली मोर स्ट्रॉन्गर एंड मोर वीक एरियाज. एंड देन यू आर मेकिंग एन इन्फॉर्म्ड राइट चॉइस.
आप सोच समझ के ये डिसीजन लेते हो, हमको लगता है ये बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन, इससे थॉट क्लैरिटी मिलती है कि आगे जाके करना क्या है, एंड कोई रिग्रेट्स नहीं रहते, एंड यू विल टारगेट द राइट कॉलेजेस, यू विल। तो जब कैलाश का केस हुआ था तो कैलाश आईआईटी से घबरा रहा था, 98% आए थे, बट तो गाइड किया कि यार आईआईटी नहीं मिल रहा है अपन को, ठीक है, वी आर नॉट 99.9% पे नहीं आ रहे, बट 98% डजंट क्रिएट द रोड। तो उसके साथ वी वर उसको बिट्स पिलानी करके दिया, एंड ही इज नाउ वेरी हैप्पी। वो सब सर बताएंगे आपको क्या हुआ। तो वो कैसे आप राइट कॉलेज, अगर आपको पहले से होगा तो आप डिप्रेशन में नहीं जाओगे कि भाई ये नहीं है तो मैं इधर जाऊंगा, एंड दिस इज माय गोल, you would be able to target those right colleges. Build a solid profile. ऐसा नहीं होएगा कि आप बाद में डिसीजन, अरे यार ये डेडलाइन मिस हो गई, या ये मैंने कोर्सेज नहीं करे, ये मैंने एग्जाम नहीं दिया। तो आपको अगर पूरा अभी से मालूम है तो आपको मालूम है इस पे टाइम पे ये करना है, you will be able to build a solid profile. And you will never have regrets. कि भाई ये ऐसा नहीं है कि हमको किसी ने बताया नहीं, जैसे हम जैसे बच्चे जो मेरे साथ नहीं हुआ, forget anybody else, मेरे साथ हुआ है, 14th मेरिट रैंक इन महाराष्ट्र, फॉर्म भरा बिट्स पिलानी का फॉर्म भर दिया, बोले यार 4 ईयर मास्टर्स करना है एमएमएस मैनेजमेंट, वो करने चले। वहां पे मालूम ही नहीं था कि वहां पे डुअल डिग्री, किसी ने बताया ही नहीं था, जाके करके आ गए। अब करियर, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, दिस इज वन ऑफ माय बेसिक मोटिव इन लाइफ कि भाई बच्चे इन्फॉर्म चॉइसेस ले सकें। ऐसा नहीं हो इन द इंफॉर्मेशन एज कि आपको मालूम नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं, ऐसा नहीं, आपको मालूम होना चाहिए। So that's the benefits. Now I'll invite my colleague Manish sir again to take it forward. Now before I do that, हम लोग क्या करते हैं कोर्सेज आफ्टर स्टैंडर्ड 10, तो आप हमारे साथ ये लेके इंजीनियरिंग कर सकते हो, हम यूटी चैंपियंस में इंजीनियरिंग करते हैं। आप हमारे पास मेडिकल कर सकते हो, हम मेडिकल पढ़ाते हैं नीट के थ्रू, हम कॉमर्स पढ़ाते हैं, सीए की तैयारी करवाते हैं यूटी गुरुमुख क्लासेस के थ्रू, हम सीयूईटी अभी जो रिसेंटली अनाउंस्ड है, दिल्ली यूनिवर्सिटी जाना है आपको, किसी कोर्स में जाना है तो हम उसकी तैयारी करवाते हैं। आपको मैनेजमेंट करना है, आईपीएम इम्पैक्ट, वो हम करवाते हैं। हम सारे कोर्सेज तो नहीं करवाते, लेकिन एक सिग्निफिकेंटली नंबर ऑफ कोर्सेज हम कराते हैं। आपको बाहर जाना है तो हम ये वाले कोर्सेज, तो आप वो रोड मैप लेके, कुछ कोर्सेज हम करवाते हैं, कुछ का हम बोलेंगे कि आपको सपोज जैसे वी डू नॉट डू सर्टेन कोर्सेज, डिजाइन कोर्सेज नहीं करते, तो हम उसका एक रोड मैप आपको बना के देंगे कि फिर आप इधर से ये करिए। सो वी वुड रेकमेंड दीज काइंड ऑफ थिंग्स। नाउ आई वुड नाउ गिव इट टू माय कलीग मनीष सर फ्रॉम हियर। मनीष सर, ओवर टू यू सर। Right, thank you so much, Anubhav sir. So in last few minutes of this particular webinar, हमने ये देखा कि career counseling is actually a very structured and a very detailed process. Not only Disha, but जब आप career counseling की बात करते हैं, तो it has to be more than your academics. It has to come from your personality interest. It has to be a lot of talking, exploration, testing, exploration, talking, and then drawing the path. तो ये जो 4 स्टोरीज हमने की थी, मैं वापस उस पे आता हूँ, where we saw these kids and हमने देखा कि ये कैसे they were stuck at the roads और अपने चौराहों पे जाके वो कैसे अटक गए और उनको अब डिसीजन लेना था और वो कैसे आगे बढ़े. So let's see what happened actually. So we are calling it happy beginnings and not happy endings, because ये जो स्टोरी है जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं उसमें सिर्फ बिगनिंग है, उसकी कोई एंडिंग नहीं है. So with all of these students, let me tell you one by one. So when it comes to Rishima Sinha did a lot of exploration, and she realized through testing, through counseling, that she's made for medical field. Her aptitude, temperament, जिस तरह से वो पढ़ती है, जिस तरह से वो सोचती है, जो उसको लाइफ में चाहिए, जिसे उसकी पर्सनालिटी है, fits more for medicine and a medical person rather than any other field. So she opted for bio in her 11th. She prepared for NEET exam, qualified NEET, and currently she is with KEM Medical College. She is into her second or maybe third year now, and she's doing very well
for herself. तो ये तो सिर्फ उसकी beginning है, अभी आगे पूरी life पड़ी है. But then Rishma realized that though she is good with all subjects and she has equal liking, when we put her to some test, we realized that, and she realized that given her personality, given her aptitude for things, she is more a medicine person than anything as far as professional career is concerned, and that's where she was drawn into. अनमोल धवन साइंस गीक, जिसको साइंस बहुत पसंद था, बट विद एक्सीलेंट रीजनिंग एंड इंटरप्रिटेशन स्किल्स थे इसके. ये डेटा इंटरप्रेट बहुत अच्छे से कर सकता था. Who could read lot of stuff and draw interpretations. He took finally commerce. उसने फिर साइंस नहीं लिया, उसने कॉमर्स लिया. कॉमर्स के साथ उसने लॉ की पढ़ाई की. There was no lawyer in his family. He chose that. He topped commerce stream. महाराष्ट्र में उसने कॉमर्स में अपने बोर्ड्स के ईयर में he topped it. He took law का CLAT exam, which is very very competitive exam. अगर आपको law field में पढ़ाई करनी है इंडिया में, he took that. He got all India rank under 10th. तो उसका जो साइंस वाला एप्टीट्यूड था वो एक्चुअली उसका रीजनिंग और which he realized got into and all India rank उसका under 10 आया. He is with the top NLU National Law School में पढ़ रहा है वो अभी. Again in his second year, rather complete करने में आ गया है, वो अपने final year में है and he is completing his law degree. कैलाश गोपाल, वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत फोकस बच्चा था, मैं आपको याद दिलाऊं. तो ही वाज अ वेरी फोकस्ड चाइल्ड. इंजीनियरिंग ही करना था शुरू से. ही स्टार्टेड IIT became a tough ask and actually created a lot of pressure on him. Study abroad चालू किया, वो भी छोड़ दिया. When he took this counseling at later stage, rather options were created for him. BITS option, उसको दूसरे एग्जाम्स जैसे BITSAT, BITS as a very good option, private college, but top ranked college with best of placements. Some of the new IITs don't stand in terms of ranking, जो BITS के साथ है. He wrote that. He got his choice of major, electronics, electrical engineering, वो वहाँ से कर रहा है, second year में है. He reports very happily that he's at one of the best places in India and he gets very good opportunities to learn and grow, और उसको काफी अच्छा लग रहा है वहाँ पे. And right now he's inspiration for many of our students जो अभी उस दोराहे पे खड़े हैं where they are deciding कि अगर IIT नहीं तो क्या. So that is one story. Coming down to Yash, clear focus, multi-talented child, but lot of information. So when he came to us in 9th, we worked entire profile building with him. 10th में he went to Harvard summer school. वो summer school करके आया, और summer school करके आने के बाद तो he realize हुआ that he would want to go in CS, computer science और tech field में जाना चाहेगा वो. All through his 9th, 10th, 11th, 12th, he wrote various exams. He did various things in his profile building, जो उसको finally उसके university admit में काम आए. He got into Purdue CS. Purdue CS is ranked among top, I'm not mistaken, top 15 or 20 programs in US, in the world. So वो उसमें है अभी. He is passing out from his second year and will be entering third now. So all 4 kids, you know, there was a problem statement for all of them, but there was a way out, which was counseling, which was structured counseling, which helped them, and a path was created. And wherever they are today, they are really very happy, and that is most important, and they are enjoying what they are doing. So ये इन चारों की स्टोरी थी जो जिस पे हम आज का वेबिनार खत्म करें. और उससे पहले, so UDream is being offered at UT. In case you are in your 9th, 8th, 9th or 10th standard, this program may help you and will make most of sense for you. You can meet our officials and admission counselors. You can enroll. Once you enroll, then people like me, Anubhav sir, will interact with you. We'll help you with all 3 stages of Disha, जो सर ने बताया भी आप लोगों को. वो तीनों स्टेज पे हम आपके साथ काम करेंगे. The program is delivered over a period of 2 to 4 months. The 3 stages are not covered in one go. Rather, they're spread over 2 to 4 months. And then you start on your career path. It has a price. If you take this service, there's a price of 10,500 inclusive of GST for this career counseling product.
So what you can do is you can call us up. You can go for counseling after fixing an appointment. If you choose to join this program, take services, then you'll have to enroll. One touch point for all this thing would be Mrs. Surjeet, our Kharghar branch coordinator. She is one touch point for all your counseling and appointment fixing need. Our telephone number and email ID is there on your screen. Our number is 9881 or she could also be reached at utnmsurjeet@gmail.com. If you want a PDF of what we have just presented, आपको इस presentation का PDF चाहिए, so you'll have to send a hi to this number. It's a WhatsApp number 7710004690. You send a hi, and right after this presentation, you will get a PDF of this. With this, we thank you for attending this webinar where we were discussing about Disha career counseling. In case you have any doubt, query, we'll be very happy to take them. So it's an open house. आपके कोई सवाल है तो आप हमसे पूछ सकते हैं. Thank you so much for attending this webinar today. Thank you. Go one by one. We will first take doubts from the offline audience, and then the online audience can raise hands, and then we'll take them one by one. They can unmute and talk. So any doubts from the offline audience first? Yes, sir. So the question which has come is, what is the career path for management? A general brief overview of the management career path. That's the question. So management, sir, you could do it in two ways. One is the traditional way of that you get into after 12th, you get into a basic graduation. A basic graduation could be an engineering or a BCom or a BSc or a BA. It could be a basic graduation in any of these streams. You could be doing science, you could be doing commerce, you could be doing humanities. And then uske aap graduation mein chale jao. And then once you got graduated, then BCom kar liya ya BA kar liya ya engineering kar li. After that, you write the CAT exam, which is common admission test for admission to prestigious management colleges in the country. They include IIM. So that is the traditional way of doing it. कि आप अभी कोई सी भी stream follow करो, graduate होने के बाद आप CAT का exam दो, and then you get into your management degree. वो 2 साल की degree होती है, which is called as MBA. That is the traditional. There is one more option which is available to you. That is after standard 12, you can directly get into these prestigious management colleges like the IIM. IIM Indore, ऐसे 5 IIMs हैं इंडिया में. IIM Indore, IIM Rohtak, IIM Bodh Gaya, IIM Jammu और IIM Hisar शायद. एक ऐसे 5 colleges हैं जो ये 5 साल का integrated course offer करते हैं, where they conduct a course exam by name IPM after standard 12th. तो उसमें आप directly 12th के बाद join कर सकते हो, and then you would pursue 5-year, 3-year BBA, 2-year MBA, and वो जो 2-year MBA होगा वो directly CAT वाले जो बच्चे होते हैं उसी में आप भी पढ़ोगे. That's about management. More questions from the offline audience? Yes. There is much more gap in students' aspirations and parents' aspirations. So how to manage this aspiration? So that's precisely what we do in this product. We पहले समझने की कोशिश करते हैं, reconcile करते हैं, पहले समझें. That's the starting point of Disha. कि वो gap क्या है और इस gap में how do we reconcile? तो वो वही चीज discussion के माध्यम के थ्रू ही निकलती है. वही चीज हम करते हैं, where we spend time with the father, spend time with the child, make him understand कि what is this, आप ये कर रहे हो. कई बार बच्चे कहते हैं कि हमको गेमिंग करनी है. अब बच्चा है 9th स्टैंडर्ड का किड है, गेमिंग मतलब दैट्स नॉट, हाँ ठीक है आप गेमिंग का करियर करना मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन उस बच्चे को समझाना कि गेमिंग विल नॉट बी कोई आपको शुरू में गेम नहीं सिखाएगा. अगर गेमिंग का डिजाइनिंग सीखनी है तो आपको सबसे पहले 2 चीजें सीखनी पड़ेंगी. यू शुड बी वेरी गुड एट कंप्यूटिंग, एल्गोरिथम्स क्रिएट करना, तो उसकी आपकी मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए. और आपको गेमिंग के विजुअल्स यूआई बनाने हैं तो आपकी विजुअल थिंकिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए. तो उसमें आपकी फाइनेंस बहुत अच्छी होनी चाहिए.
तब जाके या आपको साइकोलॉजी कोर्सेज करने हैं। तो बच्चे को ये समझाना कि भाई वो जो गेमिंग तेरा एंड गोल है, वो गेमिंग के लिए तेरे को पहले फंडामेंटल क्या कॉन्सेप्ट्स पिक करने पड़ेंगे, तो उसकी वो एक दिशा शेप होती है। दैट्स व्हाट वी वुड डू इन द प्रोडक्ट। And where is the benefit taken by integrated college after 8 or after 9? नहीं, आफ्टर 10th. After 10 only. Integrated will happen only after 10. You would not get into a regular college 11, 12. You would rather study with us. So 11, 12 वो बच्चा हमारे पास पढ़े. Integrated, he would not come to me in 9th grade or he would not come to me in 8th grade. Integrated, he will come to me only after 10th grade, 11th में ही मेरे पास. Some classes are integrated schools are 8, 9, 10. नहीं सर, ये बॉम्बे में अभी ये कॉन्सेप्ट नहीं है, अपने नवी मुंबई में नहीं है. दिस कुड बी अ कॉन्सेप्ट इन हैदराबाद और इन कोटा, but this concept is right now not prevalent in Navi Mumbai. We have regular schools until 10th standard. Integrated concept is only there in 11th and 12th, at least with us. Yes. One second. Yes. In your program, integrated program, board, state board. State board or CBSE board? State board. Integrated अगर CBSE करना है तो भी हम देते हैं, वो भी available है. So we have two options. One is CBSE option and one is state board option. Your question. Any more questions from the audience? ICSE student can take Sure. action in Yes. ICSE can sure. Yeah. Only SSD cannot go for the CBSE. Second, SSD state board. state board can shift to CBSE state board. कुछ भी कोई भी कहीं पे भी Integrated is possible. नहीं, इधर भी पॉसिबल है. स्टेट बोर्ड आज डीपीएस में जाएगा तो उधर भी एडमिशन ऐसे भी पॉसिबल. सर उसी के लिए तो हम ये प्रोडक्ट बोल रहे हैं कि मैं अगर इतना इजी होता तो मैं नहीं देर नहीं लगाता. नहीं, आई डोंट हैव एन आंसर टू दैट क्वेश्चन. आई मीन टू से पब्लिक सर्विसेज, आप इंजीनियर्स भी जा रहे हैं पब्लिक सर्विसेज में, बीए भी जा रहा है पब्लिक सर्विसेज में, बीकॉम वाला भी जा रहा है पब्लिक सर्विसेज में. वो तो आपका इंटरेस्ट है और वहां पे बहुत सारे पेपर्स होते हैं, उस पेपर्स के थ्रू है वही तो हम ये दिशा प्रोडक्ट में आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं. सर क्या मेरे पास जादू की छड़ी है? नहीं है सर, ये डिस्कवर ही करना पड़ेगा और तभी हम बता पाएंगे कि व्हाट इज राइट फॉर यू और व्हाट इज नॉट राइट. मेरे पास नहीं है उसका आंसर. For 9 and 10 for the career score 9 and 10. Can you सर इसी के अंदर हम लोग आपको बताएंगे कि भाई आपने जो पूछा 9th and 10th, तो अगर आपकी क्लैरिटी आपको इंजीनियरिंग करनी है तो 9th में फिर हम आपको बूस्टर प्रोग्राम्स देंगे कि वेयर यू कैन गेट इनटू एन आरएमओ प्रिपरेशन or you can get into some aptitude test preparation right now in 9th and we offer those solutions. तो आप अभी से ही वो तैयारी, फाउंडेशन की तैयारी अभी से करना चालू करें. from when Disha is started? सर दिशा तो बहुत छोटा सा प्रोडक्ट है. दिशा तो सिर्फ 2 महीने का one-on-one प्रोडक्ट है. ये I have been doing since the time I have started. शुरू में 3-4 साल के बाद से मैंने रियलाइज करा था करियर काउंसलिंग इज पार्ट ऑफ. दिशा तो 2 महीने का प्रोडक्ट है जहाँ पे आप मेरे से इंडिविजुअली मनीष सर से आके मिलेंगे एंड हमारी जो टीम है वो आपके बच्चे को असेस करके वो आपको दे देगी. दिशा इज ओनली विल गिव यू अ रोड मैप, एक गाइडेंस देगी और वो पूरा आपको 4 साल का प्लान बना देंगे आपकी स्ट्रेंथ के साथ. फिर बाकी कुछ चीजें जरूरी नहीं है सब कुछ यूनिवर्सल ट्यूटोरियल्स ऑफर करें. वी मे से कि भाई आपको डिजाइन कोर्स करना है तो डिजाइन कोर्स वुड बी अवेलेबल एट सम अदर प्लेस एंड आपको उधर जाके पढ़ना है. आपको आईआईटी में भी जरूरी नहीं है यू आर स्टडीइंग विद मी, यू मे स्टडी विद समबडी एल्स, बट आपने वो करियर की स्ट्रेंथ आइडेंटिफाई कर ली, करियर का पाथ हमारे पास है. Sir, I am now ready for online audience. Online audience can raise hands and take. Sir, please. Yes, sir. Mr. Arora, you can go first. Yes, sir. So I have actually 2 questions. One is, what are the options for students who want to pursue arts and fine arts in India and overseas? Number 1. Number 2, for sports, people who want to make sports as a career, what are the options for them after 10th in India and overseas?
Okay. Anuva sir, I'll go first and then you can contribute. So, Mr. Arora, see, if we say arts, arts would include, especially in 11th, 12th, it is one of the stream of studies. So, fine arts and humanities would mean same. It comes under largely under the art stream when it comes to subject specifications or from CBSE or ISC or any board. Subject same होंगे. So, आप humanities ही पढ़ रहे हैं, आप arts field में हैं, they are used interchangeably. But after your 12th, when you get into colleges, you will see कि उस पे फिर bifurcations है. You can get into fine arts or performing arts. तो कुछ painting हो सकता है, कुछ dancing हो सकता है, कुछ purely language related art subject हो सकते हैं, human history related art subject हो सकते हैं. So after 12th, you can get into them by picking arts in 11th, 12th. अगर 11th, 12th में arts as an arts ही रहेगा, सब कुछ एक ही stream के अंदर आने वाला है. With respect to India and abroad में opportunities, you have some excellent colleges in India as well, and you have some excellent options even if you want to go abroad. Going abroad would depend on a lot of things. What is your objective? आपको वहां जाके permanent residency चाहिए, job visa चाहिए, पढ़ के सिर्फ वापस आना है. So I think that's a bigger subject area that we'll have to discuss at some other point of time. But given your objective, you will have a lot of options in UK, US, Canada, all across the globe. In India, there are very competitive schools, colleges and universities, जिनमें अब admission CUET के basis पे होने लग गया है. तो आपको जो भी अच्छे colleges होंगे, Delhi University के especially, you'll have to write some exams and get into them. And pursue fine arts करना है, culinary arts करना है, performing arts करना है, तो वो आप कर सकते हैं. What was your second question, sir? Sorry, I missed it. Sports, about sports. Hello, sir. Any inputs on that? So sports के लिए, sir, there are two ways of looking at it. How we as career specialists, जब हम parents को advise करते हैं, I have handled, I would say, in my lifespan of about 20-25 years, मैंने करीब 2 या 3 cases ऐसे देखे हैं. So I would talk about one case which we did about 3-4 years back. He was a student who was a national level tennis player, but he was academically very good, very, very sound academically. तो उसके पेरेंट्स से उनसे बात करके भी रियलाइज कि वो स्पोर्ट्स में करियर नहीं बनाना चाहता है, स्पोर्ट्स इज अ हॉबी फॉर हिम. तो उसका फिर हमने बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल किया, एंड व्हाट वी डिड इज ही एक्चुअली अप्लाइड टू यूपेन and he got a scholarship, a fully funded scholarship. So we converted his strength into a very big profile, जो किसी बच्चे में, बहुत कम बच्चों में मिलती है इंडिया में. He became a national level tennis player. तो यूपेन में उसको 2.25 CR की scholarship मिल गई. So ऐसे करके we used his strength, but we did not return. There was a second child, but he was comparatively बहुत साल पहले था मेरे साथ. This was, I still remember his name, श्रीवास्तव करके उसका नाम था. So he was somebody who would be very keen कि भाई मेरे को स्पोर्ट्स में ही बनाना है. तो उसके साथ जब बात करी, तब उसके साथ डिबेट किया एंड करा कि स्पोर्ट्स में बेटा आप नेशनल तक नहीं पहुंच पा रहे हो, आपका टैलेंट ऐसा नहीं है कि आप स्पोर्ट्स में आगे कुछ ब्रेकआउट कर पा रहे हो. So what we discussed with him कि भाई तू अपनी कोई एक स्ट्रेंथ पकड़ लिए. So he went into BBA program with Narsi Monji and took his basic graduation. लेकिन उसको ये गाइड कर दिया था एंड वो उसका समझ में आया कि आफ्टर BBA he went into becoming a tennis coach, and right now he is working with an international school in Dubai where he is pursuing कि वहां पे वो टेनिस सिखाता है बच्चों को, and he's got into tennis education and tennis coaching and he is very happy, well settled. ये करीब 10-12 साल पहले की बात. So have I had a student, एक और एक बच्ची थी ऐश्वर्या करके, she wanted to really pursue, तो उसको इंडिया में तो नहीं मिली थी अपॉर्चुनिटी, यूएस में. अब इंडिया में अब खुल रहे हैं. This is अब you have Neeta Money Foundation, you have lots of these where they are taking nurturing candidates for sports. लेकिन उनमें एंटर करने के लिए you have to enter through your sports talent. कि आपको स्कूल के थ्रू ब्रेक मिला तो वो लोग उठाएंगे आपको. They would not pick it up कि कोई एक एंट्रेंस एग्जाम है या कोई एक कंपटीशन हो रही है. ये आप स्कूल के चैनल के थ्रू वो लोग ने आपको पिक कर लिया तो वो आपको उठा के they will start training you for football or they'll start training you for cricket. तो वो एक अपॉर्चुनिटी अलग है. I'm talking about this case. ऐश्वर्या करके एक स्टूडेंट थी,
she was very keen on, again she was again, मेरे को coincidentally it so happened मेरे पास तीनों टेनिस के बच्चे आए, so this girl was also a tennis girl. तो इसने सर she pursued at Los Angeles एक टेनिस यूनिवर्सिटी ज्वाइन करी थी, where उधर उसने 4 साल का टेनिस का कोर्स किया, साथ साथ में लॉट ऑफ ITS प्ले करे, और मतलब टेनिस टूर्नामेंट्स प्ले करे ड्यूरिंग हर, एंड देन उसका करियर शॉर्ट रहा, 25-26 साल तक उसने टेनिस परस्यू करा, उसके बाद शी गॉट सेटल्ड इन लाइफ, नाउ शी इज नो लॉन्गर प्लेइंग टेनिस, शी इज जस्ट हेल्पिंग स्टूडेंट्स, एंड वो अपना वेल सेटल्ड है, हुई है, शी इज गॉट इनटू हर जॉब. So ऐसे 3 बच्चों के एग्जांपल्स हैं, but it's a difficult thing for sports, that will really depend upon कि बच्चे में potential कैसा है. Thank you. Thank you. Ayush, I think it's mother of Ayush. Yes, ma'am, please ask your question. Yes, good afternoon, Anupam sir. My query is that Disha enroll करने के लिए, which is a good time. He is currently in the 9th standard. So it will be a good time after 9th or miss during the 10th. So that inputs I want from you, sir. Sir, I'll go first. Yes, sir, please. Right now is the best time. I would say 9th grade is the best time to do it, because अगर आपको clarity अभी आ जाती है और अभी से आप सोचना चालू करते हैं, तो मतलब आप 9th ग्रेड में हैं, तो I will not, जब आप 1-on-1 काउंसलिंग कर रहे हैं, तो मैं ऐसा नहीं करूंगा कि अपन वो चीज एक हफ्ते में 4 हफ्तों में खत्म कर दी, नहीं ऐसा नहीं करूंगा. We would go कि पहले वो फीड किया, बच्चा गूगल पे चीजें पढ़ रहा है, and we would probably instead of spreading it over 2 months, we may spread it over 4 months. And वो सारे इनपुट्स आपको 4 महीने में देंगे, तो बच्चा भी रिसर्च कर रहा है, आप भी रिसर्च कर रहे हो, तो the ideal time is any time from 8th to 9th. 9th is ideal. 10th is high time, I would say करना चाहिए 10th में. 11th में आप लेट हो गए हैं ऑलरेडी, तो ऐसे है. 12th में you missed a part, बस मिस हो गई है, तो the roadmap in that is 9th is the ideal time. 8th may be slightly early, लेकिन कुछ focus kids होते हैं 8th में भी चालू कर सकते हैं, लेकिन 8th में थोड़ी सी बच्चों में maturity कम रहती है, लेकिन 9th is actually the ideal time. Thank you so much. I'll take one last question online, sir. Sambhavi Ashish. Yeah, thank you, sir. My question was that for this, I mean, these 2 months of Disha program, this is going to help identify or show a vision or a roadmap for just the next 2 years, like for a student who is in 10th. Will it help decide the pick the right path, the right stream, probably the right college, or it will further go and also try and identify the exact stream or the branch? For example, within medical also, it's not necessary that everyone does a MBBS, right? There are different options like microbiology and other options which are available today. Or there is a architecture program, right? There is a B.Arch or a B Pharma. Okay, so does this stop at the, or will it just provide a visibility till the stream, the college per se, or further help in identifying what is the exact branch or the specialization basis the kids' aptitude and the personality as was mentioned? Okay. Sir, I'll go first in this. So this is a very good question that you are asking. So what will happen in Disha is, let's try and revise what was presented. There are 3 steps. At the first level, there will be a big picture that will be shown, where we'll talk about possibly the popular careers. So this could be the first canvas that is shown to the child and parents, and they understand that there are broadly so many career options available, certain kinds of personality traits requirements, certain educational requirements. After that, we get into testing, and the testing results, they conclude with projection of 3 careers. Now, these 3 careers that we will be suggesting would be basis
the interest of child, the aptitude of child, all that we talked about, the personality of child. So there will be 3 career suggestions. These suggestions are largely based on certain inherent skills that child has. So उसकी personality को लेके, उसके temperament को लेके, aptitude को लेके, whatever skills that child possess, intelligence को लेके, उसके ऊपर basis there will be 3 broad careers that will be defined, like you said, architecture, or let's say a designer or programmer, or maybe civil services, whatever it is. So we will give you that, and basis the 3 suggestions, you get a detailed report on through counseling, which exams to write, what will these exams contain, what skills you can start building right now, the skills that you can do in your 11th, 12th, when will forms be available, which are the top colleges for the given 3 careers, and the career that you choose is something where more detailing would be done. So coming down to your question now, so when we say medicine, we will tell you, should you go for oncology or should you be a dermatologist? I don't think that will be the scope. We will restrict ourselves in telling you that medicine could be the right career for you. Now, what specialization is in medicine possibly will not be the scope of Disha. Thank you. When I mentioned specialization, it wasn't so much about the exact branch of engineering or the specialization in, say, medicine or oncology or dentology or like it was more to do with whether an MBBS program or say a microbiology, a Bachelor of Science in Microbiology, for example, or a BDS, right? for example. Or we said, yeah. So on those lines, I meant. Not everyone might have an aptitude to select medicine, but then eventually become a doctor or a surgeon or so, right? If biology is a subject, I would like to add on to that. That is very different, because वो हम आपके साथ discussion में hammer out करेंगे, because we have actually identified MBBS or pure sciences as 2 different buckets. Okay. So, if you are getting into, जैसे medical science में है, वैसे engineering side में, somebody is wanting to do research in physics and somebody is wanting to get into computer engineering. These would be identified and let you know कि भाई, we think you should get into a research in physics. So, and this will be basis the outcome of those tests and discussions plus your parent interaction. Okay. All right. Thank you. Thank you. Ananya Subhash. Sir, there's one more question. Yes. Can you hear me? Am I audible? Yes, madam. Okay. My queries, actually, there are 3 queries. The first query is that I just wanted to know, like, if my daughter, who is presently in the 10th standard ICSE, if she chooses commerce, I just wanted to know whether the commerce syllabus for the science section and for the commerce, maths, maths subject for the commerce, as well as for the science streams, are they at the same level? Because she's an average student in maths. But if suppose she decides to take commerce at the CBSE, if suppose she takes up CBSE board, is the maths the same for both science as well as commerce students? This is your first question, ma'am. Yes, second? Yes. The second question is, like, now she's in the 10th grade. So if she wants to take up counseling, when can she do it? Because she is already like, we are half the year is over, board exams are due. So is it too late or is it the right time? Like, how will she find time? Okay. So, madam, first, when you enter 11th, especially in CBSE, you get 2 choices with mathematics. One is applied science and the applied mathematics, and the other is standard mathematics. So she will get to choose in CBSE what kind of mathematics she would want to go for. She can take the standard mathematics, so science wala mathematics hoga, or she can go with applied mathematics in commerce. That will not be calculus heavy, nahi hoga wo. It will be more of statistics and other stuff. So she will get a choice. As a commerce student, she can study science student wala mathematics also, or she can go for applied mathematics. This is the answer to the first question.
Second, is she late? No, you're not late. I mean, you should do it as early as possible now, because then you will get to know what career choices you have and what exams, what foundation exams, what preparations are required, so that 11th, 12th के साथ आप उसको parallelly pursue कर सकें. So the earlier the better, so that you can start your preparations accordingly right after your board exams. 2 साल की preparation कई competitive exam में 2 साल की preparation लगती है. So you can do that. Okay, and so if suppose we join now for Disha counseling, will the child be also be required to come on a weekly basis? So, and will that impact her study time? This is what is my main issue, since she's already in the 10th. So these are one-on-one sessions that we have, counseling plus testing plus where we do these discussions and report sharing. So because these are one-on-one, they are set at mutually convenient time. There are some which you take on your own, self mode mein hai, and there are some which you do with counselors. But they are done at a convenient, mutually convenient time, madam. वो map करके we do this. Okay. And there's one last question, which I would like to know about integrated and non-integrated courses. I don't know. I have an issue with the legality of this, because there a few years ago, I mean, actually the government doesn't permit integrated coaching. So there was something in the news about, such centers being closed down. So isn't that a little risky approach? Because otherwise I like this idea of integrated courses. But I have this issue in my mind that is it illegal, or will that create a problem in the student's study, when suppose the student is in the 12th and suppose the government comes in. Yeah. नहीं तो मैडम देखिए, लेट अस अंडरस्टैंड वन थिंग. ये एक बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है, और ये जब भी आता है तो हम पेरेंट्स को यही बोलते हैं दैट दिस इज मोर ऑफ अ जुगाड़ दैट यू डू. एंड ये जुगाड़ ऐसा जुगाड़ है जो हम नोइंगली करते हैं, वेयर यू आर नॉट गोइंग टू स्कूल बट यू हैव एन अंडरस्टैंडिंग विद स्कूल that you are not going to attend the regular one, you are preparing somewhere and you're preparing for that higher order competitive exam. तो वो अंडरस्टैंडिंग डेवलप करके करते हैं. क्या ये लीगल है या इलीगल है? सो आई थिंक ये कहीं फॉर्मलाइज नहीं है, लेट मी पुट इट दैट वे. एंड इट इज प्रिवलेंट, इट हैपेंस, और ये इसी तरह से बहुत ऑल अक्रॉस इंडिया ये इसी तरह से हो रहा है. एंड are we facing any problem in terms of the degree or anything that you are getting? Absolutely nahi, madam. There is no issues that you will ever face, because ultimately, जैसा मैंने आपको अभी बताया, you are with a school and you are writing the board exam as a full timer, and then you are getting your mark sheet. So इसमें it's a very common practice which has been accepted, जो कोई written नहीं है but accepted practice. Okay, sir. And will the HSC integrated Sir course also with the wants HSC? to add something. Sir, बोलिए. Yes, sir. I would like to add on in this. मैम जैसे सर ने बोला Yes, sir. जुगाड़, so there is two parts of it. One is जैसे हम लोग यहाँ पे we are doing our own integrated state board junior college. So state board has given us official recognition. So state board is no longer a jugaad. That's an official junior college in UP champions. And उधर आपको ये कोई दिक्कत नहीं आएगी. You are enrolled with us and हम ही classes conduct कर रहे हैं, हम ही कर रहे हैं. But if suppose somebody wants a CBSE option, CBSE is a jugaad. CBSE is where we get you enrolled in a regular school like St. Wilfred or New Bombay Public